ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन. थोड़े थोड़े धीरे आते रहेंगे. ऑलराइट. तो ये वीकेंड कैसा रहा आप लोगों का? ठीक था. गंदा था. गंदा था. टेस्ट तो था ही नहीं इस वीकेंड, फिर कैसे गंदा चला गया? तो प्रोडक्ट नहीं था इतना. यस सर. प्रोडक्टिव नहीं था. अच्छा. हाँ सर. युवराज सिंह की पढ़ाई नहीं हुई? कम हुई. कम हुई. बहुत inefficient हुई. ऑलराइट. आप लोगों के अभी स्कूल के एग्जाम वगैरह हो गए हैं कि होने वाले हैं? अभी मार्च में ऑफलाइन होने वाला है. हम मेरे पास फेब में खत्म हुए. ओके. मेरे मतलब अलग से कैसे हो सकता है? तुम सब एक सर ही स्कूल के हो. नहीं, मैं ISC में और रेस्ट आर्यन CBSE. सर सिर्फ विरोक हमारे बैच में से आए थे, में से बाकी सब CBSE. आओ. ऑलराइट. तो ठीक है. सो लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद आवर दिस वीक टुडे. यस सर. तो हम लोग अपना डिस्कशन भी कंटिन्यू करेंगे ऑफ द लेक्चर, एज वेल एज आई वुड आल्सो वांट टू डू सम डाउट डिस्कशन. ठीक है. यस. मैं एक तरीके से इस वीक को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहूँगा. सो इफ आई लुक एट द टाइम टेबल, ठीक है, वी हैव सेशंस टुडे and Thursday and Friday. Friday doubt lecture. Thursday and Friday. Yes sir. हाँ सर. Thursday and Friday. ठीक है. Now based on what I will teach today, ठीक है, so today is going to be lecture 3 plus I am going to do homework 1 जो मैंने दिया था उसका डिस्कशन. ठीक है. अगर पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो पार्टली एटलीस्ट बुकलेट वाला पार्ट मैं अभी कर लूंगा. DPPs में भी नेक्स्ट टाइम. ठीक है. देन थर्सडे को बचा हुआ होमवर्क डिस्कस कर लेंगे along with our regular lecture, and on Friday we will have the next lecture plus I am going to discuss the homework that I am going to give today. Okay. So Friday is a doubt lecture, so you want to be doing theory in that. Yes. So there is nothing like particularly doubt for us right now because I would not want to be restricted by when is the doubt scheduled, because पढ़ते हुए साथ में डाउट डिस्कस करेंगे फॉर इफेक्टिव लर्निंग. Okay sir. Okay sir. ठीक है. नाउ आप इन द मीन टाइम मुझे FBO के डाउट्स कोलेट करवाओ फ्रॉम द होमवर्क दैट आई गिवन. हाँ सर. सो सेकंड वाला चैट पे लिखते जाओ. हाँ सर. कोलेटेड रहेगा. एंड इन द मीन टाइम आई विल शेयर द homework for you, second homework that based on today's lecture you would be able to do and discuss on Friday. ठीक है. Okay. 2, 5, 6, 19, 18. सर मेरा बस FBO ही हो पाया. FBS DPP नहीं कर पाया मैं. ओके. करना चाहिए ना. हाँ सर. सर वो ये तो बोला वीकेंड इतना प्रोडक्टिव नहीं था, पढ़ाई कम हुई. करो फिर प्रोडक्टिव हाँ बनो, सर. बिकॉज अदरवाइज पीछे रह जाओगे. तो FBO में इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है? नहीं. चलो FBS में बता दो. FBS के मैंने FBS में 7, 9, 10. इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. तो इसको अब पहले क्लोज कर लेते हैं हम लोग. DPP का रुक जाओ रुक, पहले एक बार बुकलेट क्लोज करते हैं. ओके सर. सो FBO में 1 से 10 के बीच में एक तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है. ओके.
तो क्वेश्चन नंबर 2 is based on the concept of rate. Now if you remember lecture 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था that at equilibrium, ठीक है, and I will share these doubts का notes with you. Yes, sir. मैं रेगुलर लेक्चर नोट्स नहीं शेयर करता हूँ, बट ये डाउट्स का मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा. Okay, sir. तो at equilibrium, rate forward is equal to rate backward. Yes, sir. Now this mentioned over here, right, is the rate forward, and this mentioned over here, rate of decomposition of HI, this will be rate backward. Yes, sir. So 1.7 into 10 की power minus 18 into H2 का concentration into I2 का concentration is equal to 2.4 into 10 की power minus 21 into HI की concentration का square. Yes, sir. तो इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो HI की concentration का square अपॉन H2 की concentration अपॉन I2 की concentration का वैल्यू मिल जाएगा आपको. Yes, sir. Right, and this is something which is actually Kc का स्क्वायर, जो हमारा रिएक्शन पूछा उसका स्क्वायर है ये. हाँ सर. Yes, sir. तो यहाँ से आप Kc का वैल्यू निकाल दोगे. ठीक है. Understood, sir. Sir, I had a question. Hmm. Sir, so in the doubts to come, actually, I've got many doubts that are just like this. So in chemical kinetics, will we study a relation between rate and Kc or Kp? हाँ, there will be a section also जहाँ पे मैं रेट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करके बताऊंगा. अभी के लिए I have not got into the details of rate because it is actually part of another chapter only. यहाँ पे बस इतना मैंने आप लोगों को ये आइडिया दिया था that at equilibrium rate forward is equal to rate backward. Okay, sir. ठीक है. अच्छा, then fifth question is Kp Kc का ratio. So from the notes we know that Kp upon Kc is equal to RT raised to the power of delta Ng. Yes, sir. तो यहाँ पे डेल्टा Ng -1 है, यहाँ पे डेल्टा Ng +1 है, एंड यहाँ पे डेल्टा Ng 0 है. So based on that we can get Y is more than Z. Yes, sir. is more than X. ठीक है. हाँ सर. Okay. Then आपने 6th क्वेश्चन भी पूछा था. तो 6th क्वेश्चन इज वापस से Kc दे दिया और Kp पूछा है. तो हाँ सर. यही रिलेशनशिप है जो हमने नोट्स में सीखा था. हाँ सर, मैं अप्लाई कर रहा हूँ सर, पर आंसर मेरे को कोई भी ऑप्शंस के बराबर नहीं आया. तब मेरे को 26.38 आ रहा था इसके लिए. राइट, जो लर्निंग है इसकी हाँ सर. क्वेश्चन की वो है दैट R का वैल्यू कौन सा आपको लेना है. यस सर. नोटिस करना, R के लिए आपने 3 वैल्यूज सीखी है. 8.314 जूल पर मोल केल्विन. यस सर. 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन. हाँ सर. and 1.98, let me be even more accurate, roughly 2 बोलते हैं बट वो 1.98 होता है कैलोरी पर मोल केल्विन. ठीक है. Yes, sir. अब the choice of units gives you the value of R to be taken. ठीक है. हाँ तो सर. ऐसा हम लोग ये वैल्यू क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमने डिस्कस किया था सिंस प्रेशर इज टेकन इन ATMs. मैंने आपको ये बोला था ना नोट्स में कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो प्रेशर ATM में लेना है. Yes, sir. राइट, एंड कंसंट्रेशन इज टू बी टेकन इन मोल पर लीटर. Yes, sir. सो दिस बिकम्स द चॉइस फॉर टेकिंग R. Okay, sir. राइट. ऑफ Understood, कोर्स sir. टेम्परेचर केल्विन में लेना है एंड डेल्टा Ng आपको यहाँ पे पता ही है इसका डेल्टा Ng कितना दिख रहा है. तो रिएक्शन का डेल्टा Ng इज क्लियर टू यू. इट विल कम आउट टू बी 1, नहीं सॉरी 2 है ना. Yes, sir. तो बस यहाँ पे Kp will be equal to 3.8 into 10 की power -3 into 0.0821 into 1000
का power 2. That should give you the answer. All right, sir. Option B on that. ठीक है. Then 18th and 19th. Okay. So 18th में तो क्या दिक्कत है? 18th तो काफी आसान है. Kp का एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट. 18 मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी. 18 में डाउट ही नहीं था. अच्छा, तो ये ATM स्क्वायर आ गया ना. Sir, actually I had written comma and 8, so I thought it was 18. So I had it out in 8, not 18. अच्छा, 8th में था. Yes. 8th क्वेश्चन क्या है? Okay. Which of the following is correct? Reversible reactions do not go to completion. So most appropriate answer choose करना है यहाँ पर. सिंगल चॉइस है. अब द थिंग इज, हम लोगों ने यही पढ़ा था कि in a closed vessel all the reactions are going to attain equilibrium. Yes. ठीक है. And reversible, we call those reactions which do not go to like almost 100%. Okay. Irreversible, we call those which go to almost 100% completion. Yes, sir. ठीक है. Now, अब A option definitely makes sense. The reversible reaction do not go to completion. Irreversible reactions, well, we say that they proceed to almost 100% completion. ठीक है. Yes, sir. And based on that, A option seems to be my answer. Okay. But the reason why you would have asked the doubt is, what about D? Yes. हाँ सर, मेरे को भी डील लगा था पहले. So this is the one where you would be like, technically neither of them proceed to completion. Even the irreversible one is like 99.99999999, but still not 100. ठीक है. हाँ सर. So that is where your doubt would have been. And as I said, the most appropriate choice in this case would be A option, that reversible do not proceed to completion. Neither of the two proceed to completion would be like a controversial option, because 99.69797989 कुछ भी हो सकता है, and practically that is complete for us. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर उस पे आर्गुमेंट होगा, डिबेट होगा. ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन का A option is something which is the most appropriate answer. ठीक है. And I will not deny the fact that yes, there is a controversy to it. Okay, sir. This is like meant for a multiple correct or type. नहीं, वो है सिंगल चॉइस ही. And based on that, आ गया तो ये एंड. मतलब वो आप एम्बिग्विटी में और एम्बिग्विटी ला दोगे, मल्टी करेक्ट बना के उसको. ओके सर. यस. ठीक है. 19th is mostly a trick question only. हाँ सर. तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा ना मोल्स ऐड करके? So it will remain at 56 only. Equilibrium constant depends only on temperature ना. हाँ सर. यस सर. हाँ सर. तो मैं रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाऊं, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाऊं, doesn't matter. Yes, sir. Equilibrium constant is dependent on a temperature for a given reaction only. So it's more like a trick. Understood, sir. Then FBS में 7, 9 and 10. Okay. FBS में 7th question. ठीक है. ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसका
Isn't that great? बट धीरे धीरे पढ़ के समझेंगे तो समझ में आएगा. Sulfide ion in alkaline solution react with solid sulfur to form polysulfide ions having the following formulas and so on. The equilibrium constant for the formation of S2 minus, इसको फॉर्म करना है, from S and S2 minus. ठीक है, तो ये S प्लस S2 माइनस हो गया और इसका K12 दिया हुआ है. ठीक है. Yes sir. ठीक है. Yes sir. तरीके से है ये. एंड दूसरा क्या बोला जा रहा है? S3 फॉर्मेशन ऑफ S32 माइनस. कहां से? वापस से S and S2 माइनस से. राइट, सो आई हैव फॉर्मेशन ऑफ S32 माइनस. कहां से? S and S2 माइनस से. इसका K 130 हो गया है. ठीक है. बैलेंस्ड फॉर्म जरूर लिखना चाहेंगे. द फर्स्ट इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. Yes sir. The second equation would need 2 sulfur to be balanced. Yes sir. Why not keep 2 over here? Iron enough, so it would be better to put it on a stable. नहीं. The resultant charge would be -4 then. Correct. Acha. Both atoms as well as charge must be balanced. ठीक है. So that's a learning. इसके पहले आपने विदाउट आयंस वाले इक्वेशन को बैलेंस किया होगा तो यू नेवर बॉदर्ड अबाउट चार्ज. इट वाज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एटम्स. बट व्हेन यू आर राइटिंग ionic equations also, not just atoms, you need to balance charge also. That's why यहाँ पे 2 लगाया है मैंने, not यहाँ पर. ठीक है. Yes sir. Yes sir. फिर आपसे पूछा जा रहा है calculate the formation constant of S32 minus from S22 minus and S. तो ये S32 माइनस फॉर्म करना है. कहां से? S22 माइनस एंड S. Yes. ठीक है. तो ये K3 आपसे पूछा जा रहा है. इसको मैं K1 बोल देता हूँ, इसको K2 बोल देता हूँ. नाउ कैन यू establish a relationship between these three? Yes sir. So I can see 3 is equal to 2 1 2 minus 1. Yes sir. Yeah, I got the first. Right. तो ये K3 जो रहेगा that will be K2 by K1. 130 by 10. Right. That will be our answer. Okay sir. ठीक है. Then 9th question. For the gaseous reaction, the partial pressure of H2 and 2 are given. The total pressure of the entire system is this much. What will be the value of Kp? ठीक है. Now यहाँ पर जो आपको डाउट आया होगा वो इस तरीके से आई एम अज्यूमिंग आया होगा कि ये टोटल प्रेशर इनिशियल है Yes sir. या इक्विलिब्रियम वाला है. राइट. करेक्ट. Yes sir. Now the correct answer is equilibrium, not the initial. How do I know that? Actually, I did not know that. So I decided to maybe still work on it. So let's say I assume it to be initial only. तो फिर मैं कैसे सोचूंगा? N2 plus 3H2 giving 2 ammonia gas. मेरा फॉर्मेट फॉलो करूंगा. बेसिकली मैं इक्वेशन लिखूंगा. स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड इक्विलिब्रियम. है ना. ये 0.4, ये 0.8
और फिर ये टोटल 2.8 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा? 1.6. 1.6 है ना? Yes, sir. ऐसा मान लूंगा मैं. अब इसके बाद में मुझे बोला जा रहा है KP बताओ, है ना? That is what is being asked. However, अब I know कि if this is the start, if this is the initial, then reaction आगे या पीछे जाएगा. ठीक है, से -P -3P प्लस 2P होगा. तो इक्विलिब्रियम पे 0.4 -P 0.8 -3P and 1.6 plus 2P हो जाएगा. And I will be stuck. How to solve for P? Because मैं P solve करूंगा तो ही तो फिर मुझे KP मिलेगा. Yes, sir. तो by taking that assumption कि हो सकता है initial data दिया हो, I found that this is not working. ठीक है, I don't have enough data. Don't have enough information. तो मैं क्या डिसाइफर करूंगा इससे कि मे बी then this was not the correct thing to do. Equilibrium has to be assumption. ठीक है, maybe the better thing to do was N2 gas plus 3H2 gas giving 2NH3 and this is equilibrium का information only. Yes, sir. है ना? And that certainly will be easy. ठीक है, because if this is 0.4, if this is 0.8 and this is 1.6, this is at equilibrium, then I can write KP will be 1.6 का square upon 0.4 upon 0.8 का cube. And मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, so this is what I would then learn from the question. कि ठीक है, I had a genuine doubt. However, the important mantra is pen चलाओ. जितना हो सकता है pen चलाओ. Do something that builds your thinking. Yes, sir. ठीक है, and that is what is going to give you the confidence. अब आपने ये आंसर यहाँ से निकाला और बुकलेट में मैच करा, तो that is what is going to give you confidence now that even a question which was like this, that had some degree of ambiguity to it, कि क्या दिया है वो अच्छे से comprehend नहीं हो पा रहा है, तो भी based on my analysis I can be confident कि ये initial का तो नहीं है, क्योंकि अगर initial का होता तो फिर और डेटा लगेगा भाई. Otherwise how do I proceed? There is no other data that is there in the question. ठीक है? Yes, sir. Okay, then 10th question. So I could solve this, but then my answer is not matching. So I think I've done some error. हाँ, so इसको कैसे वर्क करना है ना, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा. ठीक है, there will be something that we are going to discuss today that is going to help with such kind of question. However, it's not more of a concept, it's more of maths. ठीक है, कैसे? यहाँ पे आप नोटिस करना. 1 mole of nitrogen is mixed with 3 moles of hydrogen in a 4-liter container. If 0.25% of nitrogen is converted to ammonia, then पूछा जा रहा है calculate the equilibrium constant. ठीक है, तो this is sensible कि यहाँ पर initial data दे दिया, अल्फा दे दिया, तो उससे मैं इक्विलिब्रियम का डेटा निकाल लूंगा और उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लूंगा, है ना? Yes, sir. ब्रॉडली मुझे एक थॉट प्रोसेस समझ में आया क्वेश्चन का. अब मैं पेन चलाऊंगा. N2 gas plus 3H2 gas giving 2 ammonia gas. This is all in a
4 liter vessel. ठीक है, don't forget to highlight these things because then you are going to make careless mistakes. Yes, sir. Start, reacted, produced, equilibrium. ठीक है, we'll do mole analysis because सब कुछ moles में ही दिया गया है, केसी भी पूछा जा रहा है, तो मोल एनालिसिस के हिसाब से this is 1, this is 3, this is not there. अब यहाँ पर 0.25% से आपको बताना है कितने मोल्स रिएक्ट होंगे. तो इज दिस समथिंग व्हिच यू वुड बी एबल टू डू? Yes, sir. बताओ कितना मोल्स रिएक्ट हो रहा है. अल्फा is reacted upon initial, reacted is 0.25%, यानी 0.25 by 100, और इनिशियल कितना था? 1 मोल था, राइट. इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? दोनों में से कोई सा भी ले लो. Yes, sir. एक ही बात है. ठीक है, एक ही बात है. तो यहाँ से आपको समझ में आया रिएक्टेड मोल्स कितने हो गए? 0.0025. Yes. ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.0075, एंड ये क्या हो जाएगा? 0.0050. Is it something that we are comfortable? Just write down the final values. Now I know, अब यहाँ पर the learning is going to come for you, that approximations थोड़े से ले लेंगे to make our life easier. I can call it almost 1. Yes, sir. I can call it almost 3. ठीक है. NH3 cannot be approximated. And this will be 0.0050. Yes, sir. तो मेरा KC क्या हो जाएगा? 0.005 डिवाइड बाय 4 की पावर 2 अपॉन 1 by 4 की पावर 1 and 3 by 4 की पावर 3. This is going to be a better way of coming up with the answer. If you want to be 100% accurate, तो ठीक है, आप ले लो. But then, sir, it will be very tedious. That will be a bit painful. This is relatively better to solve. Sir, I actually plugged this in a calculator and solved it, so I think that's still a discrepancy. The answer नहीं आने वाला है, sir. आंसर नहीं मैच कर रहा है. Yes, sir. तो पीछे आंसर या तो कैलकुलेटर से एग्जैक्टली लेकर सॉल्व कर लिया. अच्छा, और उसके बाद में ये भी पूछा ना कि सेकंड पार्ट में स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ना इसका. Yes, sir. ठीक है, जो सेकंड पार्ट है, व्हाट विल बी द केसी ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये दैट रिएक्शन गॉट मल्टीप्लाइड बाय हाफ, दैट मींस यू हैव टू पुट द स्क्वायर रूट. Yes, sir. I think stated is not matter. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yeah. ओके, ग्रेट. ठीक है, तो इतना डिस्कशन काफी है. इट शुड हेल्प यू विद द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स डीपीपी का भी हम लोग करेंगे, बट लेट मी कंटिन्यू विद आवर लेक्चर एज वेल. ठीक है, वो जो क्वेश्चंस थे उनका मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. नाउ लास्ट क्लास में मैं एक बार क्विकली आपको लास्ट क्लास का रिकैप दे देता हूँ. लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे थे, एंड उसमें वी वर इन द एंड टॉकिंग अबाउट हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन हेल्प अस गेट द अल्फा ऑफ द रिएक्शन, राइट. सो द क्वेश्चंस दैट वी वर प्रैक्टिसिंग वर प्राइमरीली ऑफ दिस मैनर, कि मैंने आपको इनिशियल अमाउंट दे दिया था और के दे दिया था, राइट. एंड देन आपसे मैं पूछ रहा था अल्फा एंड इक्विलिब्रियम अमाउंट्स क्या होंगे, करेक्ट. एंड द मोस्ट important learning that came out was this approach as well as avoiding careless mistakes. Yes, those were the two most important learnings that came out, right. Now in this approach we understand reaction लिखते हैं, format follow करते हैं, उसके बाद analysis का choice रहता है. depending on the data you would want to choose the one which saves time. आंसर सबसे आता है, नो डाउट. ठीक है, होपफुली आप लोगों ने लास्ट क्लास के कुछ जो क्वेश्चंस हमने करे थे वो रिसॉल्व करके देखे होंगे. Yes, sir. Yeah. तो आंसर सबसे आता है,
मोल्स एनालिसिस से भी आएगा, पार्शियल प्रेशर एनालिसिस से भी आएगा, कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस से भी आएगा. It's just that which makes your work relatively easier is something you will learn as you practice more and more questions. ठीक है? And then of course, while doing the analysis, we do not hesitate to take variables. We are comfortable taking the variables, right? Of course, जहाँ पर hard data दिया होता है वहाँ पे variable लेना sensible रहता है. जहाँ पे hard data नहीं है, you can assume some value also, but that is again a learning from questions. And then you look forward towards solving those variables by creating or writing equations. How do we write those equations? Again, depending upon the data, we would want to use Kc, Kp, right? Yes. All the information is given to you. So keeping that approach in mind, I have a question for you to start our discussion today, which is with this question. And I have क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था, एक लाइन का है, सिंपल सा, बट मैंने उसको इलैबोरेट करने के लिए आपके सामने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मेंशन किया है. बोला जा रहा है PCl5 is 10% dissociated at 1 atm. So what it means is that equilibrium pressure is 1 atm and alpha is 10%. ठीक है, alpha is 10%. So इसमें एक assumption है, assuming we start with PCl5 only. ठीक है. Yes, sir. Then if my vessel is kept under conditions of 1 atm, right, then what I find is that alpha comes out to be 10% when the equilibrium is achieved. The question is asking that let's say instead of 1 atm, अगर 4 atm प्रेशर पे रखा जाएगा इसको, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. Okay, so let me give you an attempt at it. Take a couple of minutes, try it for yourself. Whatever comes to your mind, follow the approach, take choices. Answer सबसे आएगा. You just have to be extra cautious.
All right. Let's see. I've written the answer in the chat. करेक्ट तो नहीं है विरुक, बट लेट्स सी कहाँ पे आपने हो सकता है मिस्टेक कराओ. नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन इन बोथ वेज. I will do partial pressure analysis and solve it for you, as well as do mole analysis and get the same answer for you. However, notice karna each and every step of my solution so that you learn if any mistakes were made by you. सबसे पहली चीज हम लोग रिएक्शन लिखेंगे. And let's say I decide to do mole analysis first. ठीक है. Now start reacted produced and equilibrium. ठीक है. Let me actually do it for you simultaneously. Just give me one moment. Okay. So this was my reaction. This is my format. Correct? Now I wish to do mole analysis. What do I put in start? So 1. 1 mole. There is no PCl3. There is no PCl. There is no Cl2. We start with only PCl5. Yes, sir. Yes, sir. Now One यहाँ पर either I can take a variable, or for the sake of simplicity I can start with 1 mole. Why? No hard data No hard data on moles is given. of moles given implies can take 1 mole to start with. ठीक है, समझ में आया? मैं वेरिएबल भी लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, तब भी आंसर आता. अब रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड कितना रिएक्ट होगा? -x. Right, so say minus alpha, because initial moles 1 है, so I can put alpha as the degree of dissociation over here. Yes, sir. Plus alpha plus alpha, so this will be 1 minus alpha, alpha and alpha, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now यहाँ पर बोला जा रहा है that 10% alpha है and P total is 1 atm, right? So after doing this analysis, पूछा नहीं है मुझसे, but it seems that I can get the Kp value based on the alpha and P total that is given. GX. Yes, sir. And I remember the expression that helps me is Kp is equal to Kx into P total raised to the power of delta Ng. Yes, sir. So based on that, I will put the Kx in terms of alpha and P total भी मुझे दिया हुआ है, delta Ng का value 1 है, right? So I get Kp is equal to alpha square upon 1 minus alpha square into P total, right? 0.1 का square upon 1 minus 0.1 का square, alpha 10% दिया हुआ है ना? Yes, sir. Into 1 की power 1. So I get Kp का value. Sir, I got 1 by 90. ठीक है. अब this gives me Kp as 1 by 99, है ना? 0.1 का square will be 0.01, Yes, ना? So 1 minus 0.01 will be 0.99, and that will be multiplied by 100, तो 1 by 99 आ गया. Yes, sir. Okay. Now this should help me in this case, because
the K of the reaction is unchanged. Yes, sir. Depends only on temperature. Yes, sir. Right. So for this reaction also, if I look forward, the same expression should hold true Yes, sir. for Kp. Kp remains the same as T is unchanged. तो केस 1 में जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा था K का, वो यहाँ पे भी होल्ड करेगा. Yes, sir. एंड यहाँ पर P टोटल जो है वो 4 दिया हुआ है. ठीक है, अल्फा पूछा जा रहा है, तो अब आप सॉल्व करोगे. ठीक है, देन अल्फा कम्स आउट टू बी वेरी क्लोज टू 5%. एग्जैक्टली 5 नहीं आता, 4.9 समथिंग आता है, बट यस, रफली वी कैन से इट कम्स आउट टू बी 5%. समझ में आया ये? Yes, sir. So it was a good question. It was a challenging question in the sense it was not like the regular questions कि initial दे दिया और KP दे दिया और अल्फा निकालना है. Rather इसमें हमें अल्फा दे दिया था और P total at equilibrium से हमने K निकाला and we used it in another case जहां पर ये भी एक learning थी that Kp remains the same because temperature is unchanged. ठीक है. But just had a question. Hmm. Sir, pressure analysis would be shorter, right? If I'm not wrong. Let's do that. We'll इसके जस्ट बाद मैंने प्रेशर एनालिसिस भी किया हुआ है. Okay. हाँ सर. इतना लिख लो, मोल एनालिसिस. Sir, really, I got 2 answers with the pressure analysis. So I think I reported the wrong one. So I think that's why. नहीं There was the one answer I was getting as 0.002. So एक बार देखते हैं. मुझे लगता है कि तुमने फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करा है. okay, sir. So pressure analysis में ये जो हम reactants produce में plus small p जो डालते हैं plus minus small p, so उसका value 0 आ रहा है क्या in one of the steps? नहीं, again वो alpha के terms में ही होगा ना. अरे हाँ. Yes, sir. ओके, लिखा सबने ये? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, लेट्स नाउ वर्क टुवर्ड्स डूइंग द पार्शियल प्रेशर एनालिसिस. तो मैं जाऊंगा सेम ही तरीके से. I will first write the equation, put across the format, and then start filling it up. ठीक है. So what do I do? Reaction, start, reacted, produce equilibrium, and now I'm going to do partial pressure analysis. What do you have for me to write about PCl5 to start with? It has to be 1 because we don't Has have to any be 1. PCl2 or Cl2. So all the total pressure will be equal to the partial pressure of PCl5. The total pressure is equal to PCl5 का pressure. 1 atm, right? नहीं, यहाँ पे तुम्हारी गलती हो गई. ठीक है, जो 1 atm प्रेशर दिया हुआ है दैट इज इक्विलिब्रियम का प्रेशर. इसीलिए मैंने वो विजुअलाइजेशन भी आपको बताया कि ये कांस्टेंट प्रेशर सिचुएशन का है. ठीक है, तो यहां पर the equilibrium pressure is 1 atm.
ठीक है. अच्छा, you might be thinking in that manner कि like piston वाला situation है तो initial pressure, final pressure सब 1 atm ही रहना चाहिए वैसा. Yes, sir. um, hmm. The thing is, हो तो उससे भी जाएगा बट और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. मैं बताता हूँ तुम्हें. लेट मी फर्स्ट डू दिस द सिंपलर वे. दैट P equilibrium was 1 atm. ठीक है, तो यहाँ Yes, पर sir. given that information you should not start with a hard data. वेरिएबल लेना पड़ेगा सर. है ना. हाँ, can't take value because P का hard data is given. ठीक है. So this is your pressure, say PA. Nothing of PCl3 and Cl2. Okay, don't hesitate to take variable. Then the reaction goes in the forward direction. So let's say Yes, sir. minus PB हुआ, ये plus PB and plus PB हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम पर ये PA minus PB, PB and PB रहेगा. Yes. ठीक है. Yes, sir. So PA plus PB is equal to 1. Now, हाँ, now यहाँ पे we have two variables and two pieces of information. One is that alpha, which is reacted upon initial. So reacted is PB and initial was PA. That is given to us 0.1. And P total, the sum of all of these species, PA minus PB plus PB plus PB is 118. तो यहाँ से आप solve करोगे तो PA and PB का value आ जाएगा. And based on that, you will get the value of KP. समझ में आया? Yes, sir. And then going on. Right. Now, अब मैं सेकेंड केस के लिए जाता हूँ. KP वही रहने वाला है. So I do the same analysis, but I take some other variables like PA dash and PB dash. Yes, sir. And here, We equate it to 4. one equation will be that the total pressure at equilibrium is 4 atm. Yes, sir. तो यहाँ पर, and second equation comes from KP. It remains unchanged. तो उसको आप solve करोगे तो इससे आपका PA dash and PB dash आ जाएगा, and you will get the value of alpha, which will be PB dash upon PA dash, and it comes out to be almost again 5% or 0.05. Yes, sir. So this was your partial pressure वाला method. Now, मुझे तो ऐसा लगता है कि partial pressure वाला ज़्यादा time consuming था Yes, sir. as compared to moles वाला method जो था. ठीक है, आप दोनों लिखो, दोनों से practice करो, then with time
you yourself will start understanding which is the one that you are more comfortable with. Sir, actually pressure दे रखा था ना हाँ, that is why all of us went with partial pressure. ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो पार्शियल प्रेशर से भी, आंसर तो आएगा ही सही. ठीक है. इसको भी लिख लो. Yes sir. यस सर. सर आप वो 4 ATM वाला रिएक्शन दिखा सकते हैं? Done sir. ठीक है. सर 1 सेकंड. अब एक्चुअली तुमने जो डाउट पूछा था ना विरोक, Yes sir. तुम्ही ने पूछा था ना कि इनिशियल प्रेशर तुमने 1 ATM ले लिया था. Yes sir. हाँ, तो तुम्हारा डाउट एक्चुअली ठीक है. द थिंग इज द प्रॉब्लम विल कम in that case because volume changes. So ये जो partial pressure analysis है, ये कब work करता है? Volume constant temperature. हाँ, when pressure are proportional to moles. Yes. That is V, T is Constant. constant. ठीक है. तो जो ये visualization मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, है ना? Yes sir. That is the visualization at equilibrium. ठीक है, not at the initial condition. Yes sir. ठीक है. So this is what I mentioned over here, that at equilibrium, this is the pressure. So actually I thought that dissociated at 1 ATM implied that in the beginning the pressure is 1 ATM. Yes. हाँ, that is there if you would have thought of it. ठीक है. But then even if that is the case, I would not prefer to then do partial pressure analysis. Moles would be better. I would do the mole analysis. I would just simply say whatever the moles were. ठीक है. वैसे तो I can assume a value also, but I can also assume a variable over here. ठीक है. Yes. Do the moles analysis and utilize that the pressure at the equilibrium is whatever given in the question. ठीक है. Then I would not want to do the partial pressure analysis. Yes sir. ठीक है. So this partial pressure analysis is
assuming v comma t constant. ठीक है? Is this clear? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay, so this was a heavy question. This was not an easy question. It looks like a very simple question, like it's just one liner. But अभी जो मैंने आपको आज homework दिया है, उसमें भी you will have certain such questions. This included. FBS, right? So, हाँ, FBS में. So the idea would be to practice the approach, write down the reaction, the format, and do the analysis. Don't hesitate to take variables. जितना हो सकता है पेन चलाओ. yes. You will get more and more clarity. समझ में आया इतना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now नोटिस करना अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे लास्ट क्लास में एज वेल एज अभी भी, I deliberately gave questions in such a manner that the maximum you had to do was solve a quadratic. The coefficients were given in such a manner that जो powers जा रही हैं वो quadratic ही create कर रही है. Yes. But let's say for example a question like this, can you see a cubic will get created? Yes, sir. Yes, sir. Like K में हम लोग K के expression लिखेंगे ना, partial pressure of SO3 का square upon partial pressure of SO2 का square and partial pressure of O2, right? तो ये multiply होके cubic kind of create कर सकते हैं. हाँ, sir. अब cubic तो solve करना आता नहीं है अपने को, तो this is where certain techniques of approximation are going to be helpful to you. ठीक है, तो कैसे वो लेना है करना है हम लोग ट्राई करते हैं. पहले आप एटलीस्ट क्यूबिक तक पहुंचो. Okay, sir. पहुंच पाए क्यूबिक तक? Sir, analysis is a bit confusing. I think there I made a mistake. नहीं, आई होप यहां तक तो आप लोग Yes, लिख sir. पाओगे ना. लाइक स्टार्ट में आपको SO3 का 1 ATM दिया हुआ है, O2 का 2 ATM दिया हुआ है, नथिंग ऑफ SO2. So naturally the reaction will go in the backward direction to attain equilibrium. Yes. So minus 2x plus x plus 2x. Yes, sir. And this is what you will have at equilibrium. And then you tried to solve for x by using the value of k. You wrote the expression. And you know that further working on this will yield you a cubic. Yes, sir. Right. So we don't want to do that though. Because cubic solve करना हमारे लिए challenge हो जाएगा. तो ऐसे questions में जो k के values होंगे
they would be given in such a manner that they would be either too large or too small for us to be able to do approximate calculations. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ as compared to these pressures 1 atm 2 atm, what do you think about K? That's a pretty large value. Yes, sir. Okay, so now we put some math to it, that the right hand side is large, that means the left hand side also has to be large. Yes, sir. Yes, sir. Now if left hand side has to be large, then the following thoughts come to my mind, that either the numerator is very large or the denominator is very small or both, right? Yes, sir. Now can the numerator be very large? So no, for that x has to be very small, and that would basically make the denominator big with respect to the numerator. So it cannot be possible. The numerator has to be less than 1 ना, 1 minus 2x है, Yes, sir. right? तो 1 से तो छोटा ही होगा. Yes. That means this can't be the case, numerator cannot be large. Then denominator must be small. Denominator में we have two terms, one is 2 plus x and one is 2x. Can 2 plus x be very small? कुछ नहीं तो 2 से तो ज्यादा ही होगा. Yes, sir. Yes. So that is also not a responsible factor. The ultimate understanding that we come to is कि the 2x value Be will very be very small. That would be making this term large. So the approximation that we stumble upon is 2x approaches 0. Yes. Or I can say x is much less than 1. Yes. Yes, sir. Okay, so that is something will help us simplify this expression. How do I simplify this expression? I put the approximation over here, and how do I put it? Requires common sense. So since x is much less than 1, I would want to ignore it with respect to 1, like 1 minus 2x को मैं 1 लिख दूं. Yes, sir. Yes, sir. 2 plus x को मैं 2 लिख दूं. Yes, sir. 2x को मैं 0 लिख दूं. No. वो common sense violate कर देगा ना. Yes, sir. Right? We would want to follow the law of common sense over here and not put x का value 0 over here, because then that will Not work. Make हाँ, it that will be stupid, like we would not be. undefined. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Putting the approximation, ठीक है, in the expression of Kp, right? This requires common sense. Now it looks solvable. Based on that, I get the value of x, and I get the value of x as 1 upon 60 root 2, Yes, sir. which is 0.0 something. है ना? हाँ, sir. Yes, sir. Is that much less than 1? Yes, Yes, sir. So the approximation seems to be also decent. ठीक है, valid approximation बोल सकते हैं अपन इसको. We always should test the approximation. Yes, sir. So good. Then we can get the values of the partial pressures, SO2, O2, SO3, जो भी हमें निकालना है वो x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, बता देंगे. ठीक है, अब SO2 का या O2 का तो रफली 2 atm ही रहेगा. ठीक है, because x is very small. This will be roughly 1 atm 1 atm. because x is very small. But we will now know SO2 का value, right? So this will be 1 upon 30 root 2 atm. Yes. ठीक है, this is what our most crucial answer would be. ठीक है, Yes, sir. एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर साइड कि कैसे अप्लाई करा हम लोगों ने. एक बार आप इसको लिख लो पूरा. ठीक है, कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो.
Written down? Yes. One second. कुछ डाउट आ रहा है किसी को? No No, doubt. sir. No, sir, clear. Yes, sir, done. Yes. Okay. So ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. A aqueous is giving 2B aqueous plus C aqueous and the Kc value is given to you. And बोला जा रहा है if we start with 1 mole of A in 1 liter solution, then what would be the concentration of A at equilibrium? ठीक है, तो subjectively we know that K is very large. Yes, sir. That means almost all of the A will be consumed and 99.9999% forward चला जाएगा reaction. Yes, sir. So we know subjectively that A will be very small. However, the question is probing that कि भाई कितना small at equilibrium. Will it be 10 की power minus 3, 10 की power minus 6, 10 की power minus 9, 10 की power minus 12, what it would be? तो ठीक है, we'll try and answer it. Yes. All right, लिखा सबने? Yes, sir. So थोड़ा सा time.
क्या आ रहा है आंसर? The cubic का ही analysis है. Can't see which one is to be approximated. हाँ सर, अप्रोक्सीमेशन निकालने में डिफिकल्टी हो रहा है. Okay, let's see how it works. So we follow the format of our analysis. A Yes. aqueous, ठीक है, 2B aqueous, plus C aqueous. Start. Reacted produced equilibrium 1 0 0 minus x 2x Plus 2x plus x. x. So 1 minus x 2x and x. This is all our mole analysis. Yes, sir. ठीक है. Now how do we solve for x? By using Kc. So Kc Yes, sir. will be 2x upon 1 का square. ठीक है. अच्छा, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये 2 का एडजस्टमेंट कर देना चाहिए था, बट चलो ठीक है. Then x by 1 upon 1x upon 1 minus x upon 1 raised to the power of 1 Yes, sir. is 10 की पावर 6, है ना? तो यहाँ पर what do we get? 4x cubed by 1 minus x. 4x cube upon 1 minus x is equal to 10 की power 6. Yes, sir. Now, what does this mean? This is a large value. Yes, sir. So what are the options that we have? Numerator is really big, or denominator Denominator is is really small. Right? So Yes, sir. numerator large. So, but then for that, x has to be very So large. that x will become negative. That is sir. 4x cube large. Yes, sir. This is not correct. Why? Because x has to be less than 1 only. Yes, sir. You can't have x more than 1. तो ये तो नहीं है. Denominator small. That is 1 minus x approaches 0. Right? Yes, That seems to be right. That seems to be okay. ठीक है? sir. Yeah. Yes, sir. So this is our approximation Yes, sir. that x is almost 1. Yes. So this means my expression of Kp, I will write this as 4 into 1 का cube upon, यहाँ पे नहीं डालूंगा मैं 1 minus x. Yes, 1 into 0. Yes, sir. तो यहाँ से you can see that I am getting 1 minus x as 4 into 10 की power minus 6. And this is my concentration of A at equilibrium. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this makes me put B option as my answer. Of course, यहाँ पे मेरे को like 4 भी multiply कर देना चाहिए था. Yes, sir. ठीक है. I should have done it with other options also. So as Sir, to in the order of अगर पूछा होता then it could have been. मतलब अगर still नहीं भी दिया होता, 4 नहीं दिया होता, तो भी मैं B option मार्क करके आगे बढ़ता ना. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. समझ में आया कैसे करा? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो. Sir, I have a small doubt. हाँ हाँ बोलो. So how do we know that the volume won't change? Well, बोला नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी, but it's like a 1 liter solution ना. Yes, sir. तो given value is what we are going to take as the volume of the vessel only, like the aqueous solution. अभी आप जैसे commonly lab में एक beaker में एक solution दूसरा solution मिलाते हो तो hardly there is any change in the volumes. Yes, sir. Understood.
Done, sir. Yes, sir. Done, sir. लिखा सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now let's look at another application of equilibrium constant, which is you can say it is not really something where you need to stress a lot on formulas or anything. It's something which is very simple, but it's just that booklet में उसको लेकर कुछ कुछ ऐसे formula बना दिए हैं, तो देख लेते हैं. Although I would not recommend to kind of rectify those formulas. ठीक है. What is it that I'm talking about? Notice करना. The concept of vapor density or molecular weight of a gaseous mixture and its relationship with alpha. ठीक है. Now this is a concept जो आप लोगों ने first chapter mole concept में सीखा होगा. Yes, sir. Do you remember this formula that if you have a mixture of gases, जैसे for example air is a mixture of N2 and O2 in say N2 80% and O2 20% by moles, तो molecular weight of air निकाला था आपने 28.8 Yes, sir. based on this formula. Yes, sir. N1 M1 plus N2 M2 upon N1 plus N2 total mass upon total moles. Yes, sir. ठीक है. तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने जा रहा है. देयर इज नो न्यू फॉर्मूला. बुकलेट में थोड़े से नए फॉर्मूला क्रिएट कर दिए हैं, बट आई फाइंड देम यूजलेस और यू कैन से अननेसेसरीली एक्स्ट्रा वर्क. व्हेन यू ऑलरेडी नो अ बेस फॉर्मूला एंड यू कैन वर्क आउट बेस्ड ऑन दैट, यू डोंट नीड टू जस्ट पाइल ऑन मोर एंड मोर फॉर्मूलाज. ठीक है. एनीवेज बहुत सारा सिलेबस है 2 साल का, बहुत सारी और चीजें हैं जिनमें हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा रट्टा मारने का. ठीक है. सो लेट्स नॉट क्रिएट मोर फॉर्मूलाज and I will show you what are the formulas that have been created in the booklet, so you yourself will find it to be useless. Yes, sir. Yes, sir. Notice करना. तो overall understanding कैसी है इसकी, that अगर मान लो ये N2O4 गैस मैं एक वेसल में लेता हूं, तो it starts dissociating into NO2 and we get some mixture of N2O4 and NO2 at equilibrium. Now, let's say if I talk about the molecular weight, then initially when there is no reaction, alpha is 0. So molecular weight कितना होता of the reaction mixture, because सिर्फ और सिर्फ N2O4 रहता, so you will say the molecular weight is of that N2O4, this is 92. Yes, sir. We call it theoretical molecular weight. Right? But because of dissociation, what will happen? There will be some N2O4 and some NO2. Right? Yes, sir. If alpha is the degree of dissociation, then C alpha moles will react. Yes, sir. Yes, sir. Right? C into 1 minus alpha बच जाएंगे N2O4 के, है ना? And NO2 के 2C alpha moles produce हो जाएंगे. Yes, sir. Right? तो उससे मेरा molecular weight change हो जाएगा, और मेरा molecular weight मैं कैसे निकालूंगा? I will use the relationship. Yes. ठीक है. Yes, sir. And based on that, I will get my relationship of molecular weight and alpha. Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. Right? If I do some मेहनत over here, so I will get this relationship, the experimental molecular weight and alpha का relationship. ठीक है. Yes, sir. ये आ जाएगा. Now, अब the thing is कि बुकलेट में क्या कर दिया है, इस तरीके से फॉर्मूलाज क्रिएट कर दिए हैं कि अगर मान लो
this is the reaction, then this is the relationship between the capital D and small d, where capital D is theoretical vapor density, basically theoretical molecular weight by 2, and small d is the experimental vapor density. ठीक है, that is the molecular weight experimental by 2, जो equilibrium में molecular weight होगा. तो उसका यहाँ पर ऐसे ये formulas बना दिए. Now the thing is that I don't need any such formulas. यहाँ पे आपने नोटिस किया कि मुझे theoretical molecular weight और ये experimental molecular weight का relationship निकालना था, right? ये experimental molecular weight है, ये theoretical molecular weight है. Theoretical molecular weight 92 क्यों था? Because that is what was there before dissociation happened. Yes, sir. So I could just simply use the molecular weight of the mixture ka formula and get my answer. I don't need to like mug up some new formulas based on some generalized reactions like this. AN goes to Na and then rectify this, or Na goes to An and rectify this, or A goes to Nb plus Mc and then rectify this M plus Nk terms mein. Yes, sir. Okay? No need. I can always just use my basics. Yes, sir. ठीक है, तो आप भी लिखो. ठीक है, put down the heading, write this much down. ठीक है, and then no need to write this. ये मैंने बस बताया है कि बुकलेट में आपको ऐसे फॉर्मूलाज दिखेंगे, इवन एक दो क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको जिनमें ये टर्मिनोलॉजीज यूज करी हुई है, बट आई फाइंड इट अननेसेसरली एक्स्ट्रा रट्टा मारना. ठीक है, I'll make you solve couple of questions so that you know how to do with or deal with such questions by the basics only. So this subheading comes after alpha, right? हाँ, मतलब एप्लीकेशंस में ही चल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो पहला एप्लीकेशन अपन ने देखा था रिएक्शन कोशेंट वाला, डायरेक्शन बताने के लिए. Yes, sir. दूसरा था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अल्फा बताने के लिए. Third year. तीसरा है which comments upon the relationship between alpha and the molecular weight of a mixture, gaseous mixture. Yes. So 1 second. Yes, sir. Right now, notice करना. ठीक है, I'm not making you write these formulas. Let them be.
ठीक है, you can actually, in fact, just a minute, ये क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को आप आंसर करो. कैसे आंसर किया? So alpha is 0.5, right? So from there, and तो आपने एकदम सबसे अपना रिएक्शन लिखा, yes sir, फॉर्मेट लिखा एंड मोल एनालिसिस करना शुरू किया. Since there is no hard data, you can assume 1 mole to start with. yes sir, Then अल्फा दिया हुआ है 50%, मतलब 0.5 रिएक्ट हो गया, तो ये 0.5 by 2 दैट इज 0.25 बन जाएगा. yes, इक्विलिब्रियम पे आपको मोल्स पता पड़ गए. and then molecular weight. एंड उससे फिर आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा. यू नो द फॉर्मूला n1 m1 plus n2 m2 upon n1 plus n2. है ना? Yes sir. अच्छा, इसमें मैं आपको एक एडिशनल पीस ऑफ लर्निंग बताऊंगा. एक बार आप इसको लिख लो, देन आई विल राइट दैट एडिशनल पीस ऑफ लर्निंग फॉर यू एज वेल. Yes, done. लिखा? Yes sir. ओके. तो यहाँ पर आप नोटिस करना that there could be an alternate method also, alternative method I should say, and that would be more like without even picking the pen I could have answered this question. कैसे? आप नोटिस करना, ये जो रिएक्शन था 2C6H5COH is dimerizing. इसको डाइमराइजेशन बोलेंगे. Yes sir. 6,6H5COOH whole twice. तो एक यूनिट
सॉरी 2 यूनिट्स कंबाइन होकर 1 यूनिट बना रही है, तो इसको डाइमराइजेशन बोल रहे हैं. नाउ स्टार्ट में यू हैड ओनली बेंजोइक एसिड, Yes, sir. राइट, एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 122. Molecular weight of the mixture was 122. ठीक है, because only benzoic acid was there. Assuming कि रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता, ठीक है, एंड अल्फा इज 100%, तो इसका आधा मोल बन जाता, Yes, sir. राइट. यू वुड हैव ओनली द डाइमर and the molecular weight would have been what? 244, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डाइमर ही बचा ना. There is no monomer, no benzoic acid that is left. Yes, sir. Then in between, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेरा इन दोनों के बीच में रहता ना, Yes, sir. तो यहाँ पर जो मेरा मॉलिक्यूलर वेट होता इन दोनों के बीच में ही होगा. इन दोनों के बीच में ही रहेगा. Add. 122 और 244 के बीच में रहेगा. Yes, sir. So we can narrow down from the options. तो द ऑप्शन सी इज दैट ओनली आंसर. Yes, sir. ठीक है, सो दैट वुड हैव बीन माय मेथड. अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना पेन चलाया है, बट अदरवाइज आई वुड हैव बीन मच मच फास्टर विद इट, कि अरे 122 से बड़ा ही होगा और 244 से तो कम ही होगा, तो 163 इज द ओनली ऑप्शन दैट इज गिवन टू यू. सॉल्व भी नहीं करता मैं, ऑफ कोर्स मुझे अल्फा दिया है तो आई वुड हैव एग्जैक्टली सॉल्व फॉर द वैल्यू दैट इज 163. समझ में आई? But sir, then this is more option oriented, right? ओरिएंटेड, यस. अगर मान लो बीच में 150 भी एक ऑप्शन होता, Then पहला मेथड डालेंगे. हाँ, मुझे सॉल्व करना पड़ता. Yes, sir. ठीक है, लिख लो इसको भी, अल्टरनेटिव मेथड को. Done. हम्म. ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव जस्ट लर्न. Try this question.
कुछ आया आंसर? So 1 second होने वाला last step. आई होप यहाँ तक तो सबने कर ही लिया होगा. रिएक्शन लिखना, Yes. फॉर्मेट फॉलो करना और उसमें मोल एनालिसिस लिख देना. राइट. अब इस सिचुएशन का इक्विलिब्रियम में बोला जा रहा है मॉलिक्यूलर वेट इज 139. तो आइदर यू यूज द फॉर्मूला m1 n1 plus n1 m1 upon n1 plus n2, or you can simply also say total mass upon total moles. The total moles are 1 minus x plus x plus x and the total Yes. mass is conserved. Right. तो initial आपने जो 1 mole लिया था, that meant 208.5 grams. 208.5 grams वो conserved ही रहेगा, है ना? Yes. तो x का वैल्यू 0.5 आ जाता है. Yes. Yes, sir. एंड पूछा आपसे केसी है तो कोई दिक्कत नहीं है. यू पुट दैट इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ केसी, x upon v and 1 minus x upon v. Don't forget the volume is 2 liters. So you will get the answer as 1 by 4. Yes. Okay. So I hope this is easy to work with. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now बस एक और क्वेश्चन कर लो. Then we'll be done for the day. Right. Try this. It's a difficult question. Let's see if you are able to figure it out. Single option correct है.
All right. समझ में आया कुछ थॉट प्रोसेस क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं? Sir, हाँ. I started with 1 mole of everything. Okay. And then, sir, because the mass will eventually be the same as we did in the previous question. So, then I applied mass by total moles. And then whatever molecular mass was suitable as per the values of X, that would be the correct answer. Mm-hmm. So I was currently doing option B. Option? No, sir, I was checking for option B. I have to check for the other two options. Okay. So there are multiple ways in which you can go about answering the question based on what we have just learned above. So what comes handy over here is understanding the knowledge, the range in which the molecular weight would lie. Yes, sir. Right? So जैसे अगर मैं यहाँ पर options वेट करूँगा, पहला option में वेट करता हूँ, तो the reaction for it is simply SO3 gives SO2 plus half O2. ठीक है? You could have also used 2 SO3 giving 2 SO2 plus O2. Not a problem. Start में, when there is no dissociation, the molecular weight is the molecular weight of SO3, which is 80. Right? And say end में, Yes, sir. if the reaction goes to 100% completion, then we'll have a mixture of SO2 and O2 with the following moles, and I apply the formula to get the molecular weight. I get the answer as 53.33, 160 by 3. Yes, sir. Now, the learning that we had was that the molecular weight must be between these two values only. Yes, sir. So the option given over here, 50, does not is in that range. Yes. So that is, I will reject this option. Okay? Or the other way in which you could have done is, you could have written 1 minus alpha, alpha and alpha by 2. Okay? And based upon the value 50, you could have solved alpha. Yes, sir. And the thing is, alpha ka range has to be 0 to 1. Yes, sir. When we once is rather than reject it. Right? So you will get a value more than 1. So that is the other way in which you could have rejected this Yes. option. Right? So when you do this exercise, you find that it is only option C. ठीक है, आपको option by option जाना पड़ेगा. There is no doubt about it. That is why the question is lengthy and time taking. Apart from the concept itself, which was not obvious, it was a slightly tricky concept. You will have to go option by option and check, and you will find that the C option is something which is an answer. Like यहाँ पर जो range आता है वो 104.25 से 208.5 आता है, तो 120 is in that range, and that will fit your answer. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, चैलेंजिंग क्वेश्चन था. ठीक है, but this should provide you enough information for you to attempt the second homework that I have shared with you. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप उसको अटेम्प्ट करो. दैट इज फॉर संडे टू बी डिस्कस. संडे नहीं, सॉरी, फ्राइडे को डिस्कशन करेंगे उसका. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज आई थिंक ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, हम लोग डीपीपी बचा हुआ 2 डीपीपीज एज वेल एज अपना थ्योरी वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, So how many lectures more for this chapter? सो आप मान के चलो आफ्टर दिस वीक 2 more lectures, 2 or 3 more lectures including doubts to be done. Yes, sir. So maybe by the end of this week, this month, we'll be done with chemical equilibrium. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Sure. All right. Any questions? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Sure. Okay then. All right. Thank you guys. Take care. Bye-bye. Thank you.